डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 7 का चैप्टर 1 इसका एडिटिव इन्वर्स के कंसेप्ट को समझेंगे। एडिटिव इन्वर्स कंसेप्ट ऑफ एडिटिव इन्वर्स। एडिटिव इन्वर्स का मतलब होता है जोड़ का व्युत्क्रम। जोड़ का व्युत्क्रम। जोड़ का व्युत्क्रम कैसे समझेंगे इसको हम लोग देखते हैं। जैसे ए का एडिटिव इन्वर्स क्या होगा? माइनस ए होगा। क्या होगा? माइनस ए। एडिटिव इन्वर्स यानी जोड़ का जो प्रति अवयव यानी व्युत्क्रम होता है वो जैसे a प्लस माइनस ए इज इक्वल टू 0। एडिटिव इन्वर्स उसको कहते हैं जिसको जोड़ने के बाद, जिसको ऐड करने के बाद वह शून्य हो जाता है, उसको हम लोग एडिटिव इन्वर्स कहते हैं। 4 प्लस माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो 4 एडिटिव इन्वर्स ऑफ 4 इक्वल टू माइनस 4। क्यों माइनस 4 हुआ? क्योंकि 4 और माइनस 4 को जब ऐड करते हैं तो ये 0 हो जाता है। सेम वे अगर आपसे कोई कहे कि एडिटिव इन्वर्स ऑफ 3 क्या होगा? एडिटिव इन्वर्स ऑफ 3 इक्वल टू माइनस 3। क्यों? 3 प्लस माइनस 3 इक्वल टू 0। अब हम लोग देखेंगे कंसेप्ट ऑफ मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। कंसेप्ट ऑफ मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स में वैसा नंबर लिया जाता है मल्टीप्लिकेशन। कंसेप्ट ऑफ मल्टीप्लिकेशन इन्वर्स 4 इंटू 4 इक्वल टू 1। 4 इक्वल टू 1/4 इक्वल टू 1। 3 इंटू 1/3 इक्वल टू 1। 2 इंटू 1/2 इक्वल टू 1। इस प्रकार से हम क्या देखते हैं कि 4 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ 4 इक्वल टू 1/4। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ 3 इन्वर्स ऑफ Dear students, now we are going to study about fractions. A fraction is a number which represents a pair of whole. A fraction is a pair of numbers. Which represents whole. जो होल को रिप्रेजेंट करता है।
जैसे फॉर एग्जाम्पल 1/4 इज ए फ्रैक्शन नंबर, 1/5 is a fraction number, 1/6 is a fraction number, 1/4 represents fourth part of whole. 1/4 equal to fourth part of 1. 1/5 represents fifth part of 1. Fifth part of 1. 1/6 represents sixth part of 1. There are 3 types of fraction. How many kinds of fraction? आपसे पूछा जा सकता है. How many kinds of fraction? Then we can say that there are 3 kinds of fraction. 3 kinds of fraction. 3 kinds of fraction. First of all, proper fraction. Proper fraction, improper fraction, mixed fraction. Now we study about proper fraction. 1/4 is a proper fraction. 1/4 is a proper fraction. You can say why. Here 1 is numerator, 4 is denominator. When numerator is less than denominator, then that type of fraction is called proper fraction. 3/2 is improper fraction. When numerator is greater than denominator, then that type of fraction is called improper fraction. Mixed fraction, 3 whole 1/2. This type of fraction is mixed fraction. Here in this fraction we find that 3 is a whole number and 1/2 is a fraction. Therefore 3 whole 1/2 is a mixed fraction. Now I think that you will understand the kind of fraction: proper fraction, improper fraction, mixed fraction. Fraction, I repeat again, fraction is a pair of numbers. संख्याओं का युग्म है, which represent whole, जो whole को represent करता है. 1/4, 1/5, 1/6 and so on. This type of pair of fraction is called, pair of numbers is called fraction. Now we study about addition of fraction. Addition of fraction फ्रैक्शन का जोड़, भिन्न का जोड़. 1/4 plus 1/5. First of all
we take LCM of 4 and 5. LCM of 4 and 5, 20. 20 divided by 4 equal to 5. 5 into 1 equal to 5 plus 20 divided by 5, 4. 4 into 1 equal to 4 equal to 9 by 20. 9 by 20. Addition of fraction. Addition of fraction. Now we study about subtraction of fraction. 3 by 2 minus 1 by 2. LCM of 2 to 2. 3 minus 1 equal to 1 by 2. This time, in this way, we subtract one fraction from another fraction. Do you understand? I repeat again. I repeat again. Now we are study about multiplication of fraction. Multiplication of fraction. 1 by 4 into 1 by 5 equal to 1 into 1 1 और 4 into 5 20. न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर देते हैं और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर देते हैं. इस प्रकार 1 by 4 into 1 by 5 is equal to 1 by 20. Division of, now we study division of fraction. Division of fraction. 2 by 3 divided by 1 by 2 equal to 2 by 3. डिवीजन के साइन को मल्टीप्लिकेशन में बदल देंगे. मल्टीप्लिकेशन बदल दिया और फिर इसके न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर के जगह पर रखेंगे और डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर के जगह पर रखेंगे. 2 by 1 2 2 2 into 2 4 और 3 into 1 3 4 by 3. Now we have a study about addition of fraction, subtraction of fraction, multiplication of fraction and division of fraction. Division of fraction. Today, now we study about like fraction, like and unlike. According to the denominator, there are two types of fraction. Like fraction and unlike fraction. like fraction क्या है? न्यूमरेटर अगर डिनोमिनेटर अगर इक्वल हो जाता है तो ये like फ्रैक्शन कहलाता है. 1 by 9 2 by 9. This is a like fraction because 1 by 9. Here we find that denominator is 9. 2 by 9. In this fraction, denominator is also 9. Therefore, both are like fractions. Both are like fraction. Now we study about unlike fraction. 2 by 4, 3 by 5. Both are unlike fraction because in both fraction 2 by 4 denominator is 4 or 3 by 5 denominator is 5. Denominator is 5. Here we find that different denominator. Dear students, आज के क्लास में इतना ही. फिर आगे के क्लास में हम लोग फ्रैक्शन पर और भी ऑपरेशन को समझेंगे कि फ्रैक्शन से रिलेटेड जो भी ऑपरेशन है उसको कैसे किया जाता है. यहाँ पर हम लोग यहाँ पर अब तक हम लोग लाइक और अनलाइक फ्रैक्शन के बारे में पढ़ चुके हैं. लाइक फ्रैक्शन में इन लाइक फ्रैक्शन डिनोमिनेटर आर सेम, इन अनलाइक फ्रैक्शन डिनोमिनेटर आर डिफरेंट.